Many years I'm living in this beautiful country of ours called Pakistan, and I travel extensively, not only throughout Pakistan, but also outside Pakistan. The topic which has been given to me for addressing to you is Manners Matter. और आपको हदीस नीचे लिखी होगी और शायद आपने इसी हदीस के हवाले से ही इसका टाइटल देखा होगा, तुम में से सबसे बेहतर वो जिसके अखलाक सबसे बेहतर. एंड आई थिंक आई कंसीडर माई सेल्फ a good speaker on the topic. Why? Because I think the very first time in the history of Pakistan, the very first book on the manners I authored. So I thought I should give you the background of this book, because this book started off, and the idea of writing this book was conceived in Karachi. And I have shared that story in the first few pages of this book. And I would like to share that story with you. I am a trained consultant and a trainer. So in Pearl Continental, Karachi, and I have a request to all of you, please, thank you very much. मुझे कुछ कहने से पहले कितने अच्छे माशाल्लाह बच्चे हैं, कहने से पहले ही समझ आते हैं. So in the beautiful city of Karachi, I was doing a training program. In Pearl Continental Hotel, Karachi, I was doing a training program, and I was addressing the local managers of a big pharmaceutical multinational company. And we had about 3 expatriates directors who were visiting Pakistan. Some regional director, marketing and HR guys, so they were visiting Pakistan just by chance. So they were also cordially invited over in that seminar which I was holding. So, I took a time, I was trying to make a point, that whatever the good West has seen, it has roots from Islam. The roots lies in Islam. So whatever the management, and this is the kind of a work which I have done, by the way, in the last 20 years. I have been given credit, alhamdulillah, to reintroduce God in corporate Pakistan. That's the kind of work which I do. So I can, you can use my expertise using the principles of Allah subhanahu wa ta'ala. I can bring efficiency and effectiveness in organization. इसी किस्म का workshop हो रही थी. So right before the lunch break, सुबह से लेके दोपहर हो चुकी थी, and I was talking about Islam and what Islam has done and what Islam could do to the organization. So just prior, about 5 to 10 minutes prior to the lunch break, we started chatting about, because we were waiting for our meal to come. हमने बातें शुरू कर दी, and they were the guests. Remember, they were the guests visiting Pakistan. तो मैं उनको बता रहा था कि मुसलमान ये, इस्लाम ने ये कर दिया, इस्लाम ने वो कर दिया. हम बातें करते करते on the corridor of the Pearl Continental, when we entered into the dining hall, the participants of the company, who were also the audience, without waiting for their guests to start their meal, they had already started their meal, and they were almost halfway through. So very cynically, he looked into my eyes. I think वो सुबह से बेचारा मुझे बर्दाश्त कर रहा था गोरा कि Islam, and he said, now what do you think of this mess? What does Islam say of this mess? And I was literally taken aback. मेरा दिल किया कि मैं मिट्टी के अंदर घुस जाऊं, धंस जाऊं इसी वक्त, कि I've taken about 6 hours to tell them what Islam has done to the civilization of the world, what Islam ought to be, what Islam has, taught even the West, and now see the practicer or the follower of that Islam, what they are doing. And they were holding on to those dining tables, and there was a mess everywhere. So that was the time when I decided that I must write a book on manners, and the name of the book is Please Mind Your Manners. You don't know what is going to come up. So I'm going to share the reflection of the book with you, because there is absolutely there are about 600 manners, and I call it universal manners. It means that all the manners, and this is the beauty of all the books which I have written, you can, if you take away the name of Islam, nobody can say this does not include the best practices in the manners. Universally acceptable manners. आप इस्लाम को खत्म कर दीजिए
So this book is equally good if you are a Christian or if you are a Hindu or if you are anybody. Why? Because it is based on universal acceptable manners. So the premise or the theory or the hypothesis I have been living with in the last 20 years is that anything and everything which is good, which can be practiced, and which will pass the test of the time, it can be nothing else but Quran. Why? Because, for example, Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain. Rabb is not of the east only, Rabb is also of the west. So if anywhere in the world, if somebody was becoming successful in any walk of life, he must be doing something in accordance with the laws of nature. Otherwise, he would have never become successful without knowing even maybe. Otherwise, Quran would have never been called the final book if there was some other success recipe over and above the principles of Quran. So using the same hypothesis, I've traveled extensively worldwide, meeting all those people who became successful in their world, in their lives, in their careers as students. Just trying to see, okay, maybe they have discovered some other recipe of success. And Alhamdulillah, till today I have not discovered any other principle which was not there. So, using the same methodology, this talks about the universal best principle. However, it talks about the universal best principle in relation to Islam, because in every single manners, I have also quoted the references of Quran and Hadith. So there is absolutely no way that I can share those 600 principles with you. However, I have taken few principles which I would like to share. But before sharing, I would like to give you where this is coming from. Unfortunately, are you comfortable with the language? Okay. So people start something, and then over the period of time, they will even forget why they did start something. This is the principle of mind. You do something for a reason. You keep on doing it, let's say for about 30 days or 40 days. And the habit gets established. The moment the habit has been formed, and that act has gone to your subconscious, you will continue doing it without even knowing why you were doing it. And this is the beauty of it. तो होता ही है कि अक्सर का लोग भूल जाते हैं कि हम जो हैं वो क्यों हैं, या अखलाकियात का वर्ड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो मेरी एक आदत ये है कि आई ऑलवेज लाइक टू गो एंड डू सम रिसर्च ऑन if we are human beings, why we are human beings? What special we had? तो यही सवाल मेरा इसमें है कि if we look at the word अखलाकियात, जिसको आज अक्सर का जुबान में we call it, let's say morals भी कह देते हैं लोग, but the word अखलाकियात comes from the word इखलाक. ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है. Now the word इखलाक by itself comes from the खल्क. खल्क के मायने क्या है? जो क्रिएशन. इट मीन्स के आई कैन नॉट क्लेम टू बी अ इंसान. मैं खल्क हूं ना, मखलूक हूं अल्लाह की, क्रिएटेड हूं, क्रिएटेड वन हूं. तो अगर इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट, कि अगर मैं खल्क हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो मैं अगर पैदा होने की वजह ही मेरा अखलाक है, अदरवाइज आई एम नो डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल. एंड कुरान इटसेल्फ सेज इट कि जो लोग अगर अकल वाले नहीं हैं, जो इन आदाब का नाम इंसानियत है. I have been given a title which I can wear. I am a human being. We need to know why we are human beings. What has made us human beings? If I don't do what I was supposed to be doing, should I still be called a human being? Quran इसका जवाब देता है कि नहीं. Because remember, as a student of science, you know कि water has character. Everything has character, and those characteristics will make that thing that. So water has some characteristic. If those characteristics are not in any fluid, you can call it a syrup. You can call it something else, but not the water. क्योंकि हर चीज के पीछे एक साइंस होती है. So interestingly, अगर आप ये देखें, do you think it is just happened by chance?
आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में ये चांस, दिस इज जस्ट लाइक अ मेयर चांस कि मैनर्स कम फ्रॉम द वर्ड मैन। So it's all, and that is what Allah subhanahu wa ta'ala has asked you. For God's sake, afala taqaloon, afala yatadabbaroon, afala yatafakkaroon. और भागना छोड़ो, सोचो, सांस लो। यू आज आप रोज दिन में 50 बार मैनर्स विदाउट इवन नोइंग व्हाट मैनर्स मीन्स, वेयर इट मैनर्स इज कमिंग फ्रॉम। कि एक जमाना था right after Islam, in the dark ages of Europe की हिस्ट्री पढ़ी है, then you would know कि they were called savage, वहशी, they were not called human beings. उन्हें आप वहशी लोग कहते थे। वो वहशी इसीलिए थे कि they were not civilized. So Islam basically came to teach you the art of civilization, to teach you those skills to help you associating with people like you. And that's exactly what that hadith is. और इसी पे एक हदीस नहीं है, कोई 15, 20, 30 हदीस है, तो मैं आपको सुना देता हूं कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक आदमी जिसका अखलाक नहीं है, और वो भी, और जिसका अखलाक है उसकी रुतबा ऐसा ही है जो एक ऐसे शख्स का जो सारी जिंदगी रोजे पे रहा हो या सारी रातों को इबादत करता रहा हो। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हैविंग दोस। और इसमें डॉक्टर गुलाम मुर्तजा बड़ी अच्छी बात किया करते थे कि जो आपका हक अल्लाह है, दैट इज वन ऑन वन हैंड, एंड इफ यू पिक अप दैट हक अल्लाह, हकूक अल्लाह, सो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा टुडे इज ओनली फुलफिलिंग दैट हकूक अल्लाह. But Islam was supposed to be something else beyond Hukuk Allah, and that was Hukukul Ibad. And unfortunately, you do not fulfill those Hukukul Ibad until unless you, first of all, you also look into what those Hukuks are. So, this is not something which happened by chance. आज के दौर में, if I ask you something, what leads to success? What would you say? Hard work, okay. ऊंचा बोले, ये कवाली की आवाज आ रही है. One word, money. Okay. I think you need to read my book, Road to Success. Money, okay. Hey. Persistence, yes. Good. What power? Willpower. Willpower. All right. What else? Determination. Fine. Okay. Fine. I mean, majority of the thing which I'm mentioning is what we call attitude. But if you look down at the research, which I like to share with you, mashallah, you are becoming doctors. आप डॉक्टर बन रहे हैं, but there is a very interesting research, and I think that's where it starts. The whole story starts. The civilization is now discovering those laws of nature which was given to you on the plate 1400 years ago. 1400 साल की civilization ने, you have discovered nothing over and above what was already there. This process of discovery is taken 1400 years. So, one method is that you, like West, you continue your struggle towards finding the truth of life, and you discover it the hard way. The other one was, do what you ought to be doing, just surrender to that book and just do it, and later on you might discover what was the wisdom behind these guidelines. So आज research ये बता रही है, especially after the emergence of the human school, behavior school, ये 60s के बाद worldwide, now you see the emergence of human behavior school in every discipline of life. Human behavior. It's all about human behavior. What do they say? They say, there was a time when success used to be the function of intelligence. How good you are, number kitne aapke aaye. Over the period of time, what they say, that is only
tip of the iceberg. Research is showing you something totally different. Intelligence is not something which is going to determine your success in the years to come. There is something else, and they have named as that intelligence quotient versus emotional quotient. It is not intellectual ability, it is emotional ability which is going to bring success to you. अब इस पर रिसर्च देखिए क्या कहती है. I think this is a name which is not unfamiliar to you, right? Credible research आपसे बता रहा हूं कि it's a very credible research. Study on Harvard graduates. बड़े गौर से सुनिएगा और मेरी रिक्वेस्ट ये है, प्लीज मोबाइल शोबाइल बंद कर दीजिए, और अगर आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो फिर आप बाहर उसके साथ चले जाइए, मोबाइल के साथ ही. A study of the Harvard graduates in the fields of law, medicine, as well as teaching and business. They found that scores on entrance exam in terms of intelligence had zero or negative effect on the performance. It means that the people who became successful, they were not those who had scored A's. मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बता रही है. Okay. Paradoxically, intelligence quotient has the least power in predicting the success over the period of your career. Okay? So, among that pool of people smart enough to handle the most cognitive demanding, लेकिन वो आखिर में क्या कहते हैं? In careers like law, medicine, teaching as well as the business, where professional selection focuses almost exclusively on intellectual abilities, emotional intelligence carries much more weight than intellectual ability. So unfortunately, the number of, hello, sir. Unfortunately, the number of time you spend, number of days or number of hours and the number of years you have spent in building your intelligence is good to an extent only. From that day onward, the day you graduate, it is not going to take you to a next higher level, because if you look around, you will discover that there are some other abilities in those people who are successful. And today we call it emotional intelligence. आज इस पे किताबें लिखी गई हैं, वेस्ट ने इस पे इतना काम किया है, they call it emotional intelligence. It's not intelligence as intelligence, but it is rather your ability to get along well with people. Okay. So, in every field, emotional quotient is 2 times as important. 90% of the success in a leadership is attributable to EQ. The managers high on EQ were low on burnout, meaning if you have a better EQ, emotional intelligence अगर आप में है, तो you will not even feel the stress. You will able to cope up with the adversaries of life in a better way. एक आम आदमी को तकलीफ हो जाएगी, वो तकलीफ कम होगी, but उसको लगेगी ज्यादा. But the person who has learned how to cope up with adversaries, he will quickly come out of those adversaries because of his positive attitude and the way he was tackling those difficult situations in life. So that is also emotional intelligence. And then 181 different positions from 121 organizations worldwide, 67% of the abilities deemed essential for effective performance were emotional competency. So 2/3 से ज़्यादा सक्सेस में आपका it's your emotions. जिसके ऊपर हमने ना कभी एक कोर्स पढ़ा है, ना 3 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, ना एक कोर्स पढ़ा है, वी हैव स्पेंट एब्सोल्युटली नो टाइम इन बिल्डिंग आवर इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर 2/3 ऑफ आवर सक्सेस इज डिपेंडेंट. सो माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज, if that's what emotional intelligence is, which is a science where it's the art of understanding your own emotions, why I'm feeling pain, why I'm feeling happy, why I'm feeling excited, why I'm feeling low, why I'm feeling high,
And then, because until unless, Hazrat Ali ka saying hai, if you know yourself, you will know Lord. अपने आप को जानो, अपने रब को जान जाओगे. You cannot appreciate what God is until unless you first know yourself. The moment you know how complicated machine you are, only then you will start appreciating there was a creator. एक जाहिल के लिए तो ऐसा ही है बस. So you have to even know, you have to be a scientist to an extent, even to appreciate and to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. एक जाहिल आदमी तो उसको शुक्र भी अदा करने के काबिल नहीं है. So once you know that कि जी I have these emotions, I like or I feel happy when my dad deals with me like this. When my mom listens to me, I feel better. ये मेरे emotions है ना. When I know my emotions, and I also know why I am feeling that way, what is causing that emotion, it means then I will be able to understand someone else's emotion as well. अगर मुझे नहीं पता कि ये मुझे बुरा लग रहा है, तो how would I know कि उसको क्या बुरा लग रहा है? और ये हदीस ये देखिए, मोमिन कौन था? अपने लिए वो पसंद करो. Unfortunately, the issue is we continue treating other people, but we don't like to be treated ourselves the same way. And that's where the problem starts, that we have different standards. We treat people differently than we like to be treated by people. ये जो problem है, इसकी वजह यही है कि you understand your emotions, why you are feeling the way you are, and then also you could appreciate if somebody comes to you, अगर आपने उसकी जेब से उसका पेन निकाल लिया तो उसको कैसा लगेगा, या अगर वो आपके घर में आके उसने आपके बिस्तरा उल्टा कर दिया तो आपको कैसा लगेगा, या खाने के ऊपर आके उसने अगर एक खाने के ऊपर छह प्लेटें गंदी कर दी तो आपको कैसा लगेगा. या आप उसी वक्त जान सकते हैं जब आप प्लेटें धोनी आपने हो. अगर आपके मुलाजिम ने प्लेटें धोनी, अम्मा ने धोनी है, फिर आपको यू डोंट केयर. सो इमोशंस क्या कह रहे हैं? You put yourself in other shoes, not necessarily that you would like to know yourself, but more importantly that you would like to know somebody else. Because if you don't know yourself and how it impacts you, you will keep on doing the same thing with somebody else. आप जो मसला, आपके घरों में क्या मसला है? आप किसी के घर में मान जाते हैं, आप अपने प्लेटें उठा के नहीं आते. Why? इसका जवाब इसमें है. Why? Because you don't wash those dishes yourself. Because you have not put yourself in that shoes. If I had 100 people invited at my home and everybody used about 10 plates and they left it there and I had to stand on my feet for next 3 hours washing those dishes, I think I will be able to comprehend how it feels to wash those dishes 3 hours after the guests have left and I have an office at 8 o'clock in the morning. Only then I will know that. So the science says you cannot be human being if you don't know how it feels. So you put yourself in that shoes first. ये टक्कर अगर आपके साथ हुई होती तो क्या होता, ये बच्चा अगर बीमार आपका हुआ होता तो क्या होता, टांग अगर आपकी टूट जाती तो क्या होता, इस मोटरसाइकिल पे उस शख्स की बजाय अगर आप बैठे होते तो क्या होता, और आपके ऊपर कोई छींटे डाल के चला जाता. You have to put yourself, and that's where the science of emotions comes in, and this is the foundation of the science called emotional intelligence. You know the emotions, you know the emotions of others. Then, number 3, you will be able to understand somebody. And once you understand other, you can use the power of these emotions to strengthen the relationship. जिसे आप कहते हैं ना, एम्पैथाइज करना शुरू आप कर देंगे लोगों से, and you will become a no nuisance persons, and if you become that, the life is yours. So, having said this, my question is, how could you, if you look deep down in the science of emotional intelligence,
I am going to share with you 5 or 6 big principles considered critical enough in civilized world. और इसका मैं आपको वजह बताऊंगा कि why I am calling those people civilized and not us civilized. क्योंकि civilization का एक जर्नी है जहां पे अल्लाह has given us a head start. But Allah gave that head start to those people who knew who they are and they will practice it. But if you are not practicing those laws of Allah subhanahu wa ta'ala, then you don't have that head start. Then the West have the knowledge better than you, and they had the knowledge coming to them through their learning, through their civilization. So first principle is of the emotional intelligence as well as of the manners. Number 1, respect people unconditionally. I work for donors, Britishers, Americans. I work with them. मेरा एक चपरासी था, उसको हमने कहा यार ये चपरासी की जॉब है, वहां पे तुम्हें 12,000 रुपया तनख्वाह मिलती है. अब मैं आपको बताने लगा हूं, the value people put on the way they are treated. एक शख्स इस्लामाबाद में रहता है, उसको 12,000 रुपया तनख्वाह मिलती है और वो सारा दिन चाय पानी देता है. मैंने उसको ऑफर दी कि तुम एबटाबाद चले जाओ, तुम्हारी तनख्वाह हम तुम्हें ऑफिस असिस्टेंट बना रहे हैं और 25,000 रुपया तनख्वाह होगी. ही स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने इस दफ्तर को छोड़ के नहीं जाना. पूछा गया जी क्यों? कहता nobody will treat me the way they treat me here. You know, if you look at Maslow's hierarchy कहती है the money is only good. माफ कीजिएगा मेरी जुबान, मैं माफी मांग सकता हूं लेकिन सच सुनिए, money is only good. कुरान इसके बारे में ये कहता है कि तुम जानवरों में तुम्हारे में क्या फर्क है? सुबह होते हैं, दिन चढ़ता, वो भी भागते हैं पैसे के लिए, तुम भी भागते पैसे के लिए. So physical needs are only good for a time, for a certain period, for a certain जब तक पेट खाली है, that's all. उसके बाद money is no motivator at all. Money is only a motivator for those people who have not even met their basic needs. And the moment basic needs are met, immediately the next higher level need, which are emotional needs. I need to be loved, I need to be appreciated, I need to be heard, I need to be respected, I need to be acknowledged, I need to be this and I need to that. This is much more important to me than somebody giving me 2,000 rupees extra and yelling all day long on me. आपसे पूछ लेता हूं, I pay you 5,000 rupees every month extra, but I yell at you, I scream at you and I abuse you. How many of you like to work with me? Raise your hands. मैं आपको 10,000 रुपया तनख्वाह दूंगा, आप क्या एक काम ये मेरी गालियां रोज सुने. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दिस जॉब? ओके, देयर इज वन. देयर इज अनदर वन. अब आप गौर से कीजिए कि देयर आर 3 men and 1 woman, 1 female there. Only that person would work for an abusive boss or would live with an abusive husband or a wife who yet has not met the basic needs. So, अगर तो ये भूखे हैं, खाना इनको नहीं मिला हुआ, इनका जवाब क्या होगा? सर्च ये कहती है कि although you hire somebody who is hungry, he has no job, he is starving to death, you make him sign a contract letter and you tell him that you will be treated like this and you make him life look miserable on a piece of paper and you make him sign the document, he will sign it. He will sign it. But the moment his tummy is full and he has an option, जो ही पेट में खाना गया, पहले महीने की तनख्वाह मिली, उसने कहना है
कि ये साथ वाली बाजी अच्छी हैं, ये गाला नहीं करती हैं, अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं। किसका? सर वो पुराने जमाने से, मैं तो आपको मॉडर्न साइंसेस बता रहा हूं। और बाज दफा अफसाने गलत नहीं होते। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर देयर आर पीपल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इफ देयर वाज नो सच थिंग लाइक बैड, so there was no test left for me to synthesize rightness. If everybody has the same voice, if every single one of you was celebrating wedding the same way, then there was no test for me. आप भी शादी वैसी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, then there is no issue. That's what the beauty is. Having different point of views and then having or developing that intellectual ability to synthesize what is right. There are many dramas which have some truth, and there are many dramas which are absolutely lie and nothing more than a lie. So it is my job and your job to find out or to synthesize what is the truth. Research ये कहती है कि ये सच है। मैं इसका विटनेस हूं क्योंकि आई वर्क एज अ कंसल्टेंट एंड आई हैव वर्कड विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज वर्किंग इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर इन इंटीरियर सिंध, bringing people, giving them 15,000 rupees extra salary, making them, showing them the videos कि ये तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम शेल्टर में रहोगे, एसी लगा होगा, लेकिन ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारी रूटीन होगी। ओरिएंटेशन मूवी 60 मिनट्स की कि दिस इज योर जॉब, ये तुम्हारा काउंटर है, ये तुम्हारा जॉब है, ये तुमने करना, टेम्परेचर इतना है, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट। बट आई एम गिविंग यू 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू गोना स्टे विद मी फॉर 3 years। उस बच्चे को 3 महीने की नौकरी, 3 महीने की तनख्वाही मिलती है। ही बिकम्स लिटिल कंफर्टेबल एंड ही रिजाइन्स। आई एम अलोन, नोबडी टू टॉक टू, nobody to share, nobody to appreciate, nobody to reward, nobody to recognize। किससे बात करूं? अम्मा को समझ आ जाती है क्या कह रहा है कि मेरा बेटा कह रहा है अम्मा मेरी ब्याह कर दो, मेरी शादी कर दो मेरी। So, वो उसी जॉब को छोड़ के, जिस जॉब के पीछे उस बेचारे ने 1 साल मेहनत की होती है जॉब ढूंढने में, वो उसी जॉब को छोड़ के अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए जॉब को किक आउट करके लाहौर वापस आ जाता है कि जनाब मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी शादी कर दी। व्हाट हैपेंड? फिजिकल नीड्स एंड राइट आफ्टर इमोशनल नीड्स। अब इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंस लेटर, and the cycle goes on. This is what the humanity is all, and your job is, my job is to understand it. कि इंसान की फितरत अल्लाह ने यह बना दी है, आप माने ना माने फितरत यही है। आपका मुलाजिम अगर आपके पास काम करता है, मजबूरी में कर रहा है, अगर उसकी बेइज्जती हो रही है, अगर उसको यही तनख्वाह बेहतर मिल जाए जहां पे उसको जिल्लत ना मिले, 1 मिनट नहीं सोचेगा वो। दिस इज व्हाट द ह्यूमन साइकी इज ऑल अबाउट। सो कंपनियों में क्या होता है? In the last 60 years, what exactly has happened? There's a new school of thought called Human Behavior School of Thought has emerged, where they have Pakistan में there are HR managers, there are coaches everywhere, they are mentors, they are teachers, उनकी काउंसलिंग हो रही होती है एम्प्लॉइज की, उन्हें वीडियोस दिखाई जा रही होती है, ओरिएंटेशन दी जाती है। इन अमेरिका देयर आर क्लर्जीज, यानी कि इवन के यू विल हैव प्रीस्ट सिटिंग विद यू, you will have a psychiatrist, official psychiatrist provided to your organization people just for their इमोशनल नीड्स। स्पेशली इन अमेरिका, जहां पे आपको पता नहीं कि आपके घर में कोई लिविंग इन अ जॉइंट सिंगल फैमिली, और शादियां आपको पता है वहां पे कितनी फ्रेजाइल हैं, तो उस सीट में एवरीबडी हैज अ नीड कि यार रात को मेरे साथ ये हुआ, तो आई लाइक टू शेयर, एंड इफ देयर इज नोबडी टू शेयर, आई पिक अप द टेलीफोन एंड आई कॉल द हेल्प डेस्क। वो हेल्प डेस्क का बंदा आ जाता है, सिर्फ मेरी कहानी सुनेगा, मेरे साथ ये हुआ, एंड कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, एंड यू फील लाइटर। That's all. But it's a human need. It's a human need. So अगर आप अपने आप से पूछिए, how many of you would love to be alone for the rest of your life? Nobody. यार कोई तो होगा। सोच समझ के जवाब दीजिए, मेरे पास जवाब अगला है मुझे। मैं पहले सोच समझ, who would like to be alone for the rest of your life?
None. Allah subhanahu wa ta'ala says, I have created you in pairs. And then did what? कबीलों का जिक्र आया था अभी कुरान पाक की आयत में. So human beings are social animals. We are not only physical beings, we are social beings. So we have to learn that every time there is somebody around, we have to learn to appreciate people, to respect people. And it is only possible if I know that I am not even complete myself. और arrogance की theory ये कहती है, the more unaware you are about yourself, the more unforgiving you would be about others. The more you are aware of your own shortcomings, the more forgiving you would be towards others. अगर आपको पता चले कि मैं खुद कितना नामुकम्मल हूं, कितनी गलतियां करता हूं, your attitude towards other people who are making those mistakes would be very different. So रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, he knew who he is. He knew who he is. So अगर एक जू औरत आज कूड़ा नहीं फेंकती तो उसके घर चले जाते हैं कि आज तूने कूड़ा क्यों नहीं फेंका? Because he knew who he was. So reaching at that state is only possible once you really know who you are and how a particular act of yours is going to affect you as well as people around you. Otherwise you would not know that. So that is why Islam gives you guidelines that you have to respect people unconditionally, because you don't really know how quickly people are going to change overnight. So you label somebody today, you don't know who this person going to become tomorrow morning. People change overnight. And there will be many examples even in your families, even around you. So you have to respect people unconditionally, because you are not respecting their qualities, you are respecting their creation. ये इंसान है, हजरत इंसान, इसका क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. So you are respecting that creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Not necessarily that you are appreciating somebody as a good friend. No, वो बात की बात है. But पहले we need to learn how to appreciate and how to respect the humanity. हमारी हालत ये है कि कराची लाहौर के शहरों में आप फिरे ना, so इतना दुख होता है कि you will have so many people who you will almost run over. कि अभी बस लगता है किसी गाड़ी के ऊपर मैं इसको नीचे देने ही लगा था. हमारी वो दिल ही खत्म हो चुके हैं. Do you notice your behavior on roads? Come on, bolo. Do you notice that? How do we behave on street? I'm telling you, why do we behave that way? Because we don't respect humanity. We don't respect people. That is why. आपको पता है कि बुढ़िया सड़क क्रॉस कर रही है, एक बाबा जी सड़क क्रॉस कर रहे हैं. Only that person will not stop the car for that Baba who thinks that this stage he will never go through. अगर आपको ये पक्का पता है कि 10 years down the road, that's how you are going to become. ये है वो पहली लाइन. Know yourself. Know your emotions. If you were that Baba who was passing over and somebody ran over you, how would you feel? Only then you will be able to appreciate कि बाकी आदमी जो गुजरा उसका दिल पे क्या गुजरी है. You know, if you try to have a X-ray of this society as a whole, कि having no place for handicaps, no parking. यहाँ पे अमेरिका में तो बिल्डिंग बन सकती है हैंडीकैप जब तक आपने का इंतजाम नहीं कर दिया, और जब हर शॉपिंग एरिया के सामने आपने डेजिग्नेटेड एरिया मार्क नहीं कर दिया, एंड नोबडी कैन डेयर टू पार्क द कार देयर. इवन के बस के अंदर भी उन्होंने जगह बनाई होगी कि अगर बस में एक हैंडीकैप की चेयर ऊपर कैसे चढ़ेगी.
सो उस माहौल में एक बच्चा जो परवरिश पा रहा है, ही विल ऑटोमेटिकली लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हैंडीकैप्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज सीइंग कि इनकी गाड़ियां ज्यादा हैं, इनकी पार्किंग ज्यादा है, इनके पीछे लाइन में आपको पीछे लगना पड़ेगा। और ये जो हमारी नस्ल बैठी हुई है, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट बीइंग हैंडीकैप्ड? एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस और एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट आइदर डिजीज और वीक और old, elderly people or even kids or women. We have no respect because we have not seen it happening. So Islam actually came to tell you these basics about humanity. In every civilized society, you will show your civilization by developing different laws and practices for the weaker element of the society. हमने ये मुल्क बनाया है प्रिविलेज लोगों के लिए। इस्लाम आया था आपको यह बताने के लिए कि हाउ डू यू लिव और ट्रीट द वीकर एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि वो जो कहानी मैंने शुरू की थी, उस बंदे को जिसे तनख्वाह रिफ्यूज कर दी, उसकी वजह बता रहा हूं। मैंने उससे पूछा था HR डायरेक्टर कि यार डबल तनख्वाह, कहता सर डू यू नो कैथी मुझसे बात कैसे करती है कि मेरी तो अपनी बीवी मुझसे ऐसे बात नहीं करती। अच्छा, कहता था मैं उनका मुलाजिम हूं, चाय पिलाने वाला, मुझे मेरे किचन में आएगी और अगर मैं मोबाइल पे होऊंगा वापस मुड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आएगी, आगे से कहेगी इस्माइल कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, एक्सक्यूज मी कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब वो कहता जी मैं तो कहीं नहीं जाना। कहना जी तुसी जो तनख्वाह दे रहे हो वो भी वापस ले लो, आई वांट टू स्टे। नो दिस इज हाउ दे ट्रीट यू। अगर आपने काम की अजमत देखनी है ना, नथिंग इज स्मॉल। यू आर अ प्लम्बर, you will enjoy the same level of respect as a human being. Because that their civilization has taught them how you respect the weaker element of the society, weaker not necessarily physically weak, but even weaker in terms of somebody who is not fortunate enough like you. For example, कि साइकिल वाले का हक दुनिया में पहला होगा। हमारे जमाने में हमारे मुल्क में साइकिल वाला जहन्नम में जाए। सबसे पहला हक पजेरो वाले का या रेंज रोवर वाले का, और करते करते साइकिल बेचारे तो किसी लाइन में नहीं आता। बाहर के मुल्कों में यह है कि स्पेशल लेन, कि ये साइकिल वाला गुजरा होगा तो कार हाउ टू रिस्पेक्ट औरत वीक, बूढ़ा वीक, handicapped weak, as well as those people who are not fortunate enough. So respect people unconditionally, because that's the very foundation of Islam. By giving you the very first example of Hazrat Bilal, one of the very first convert to Islam, Habshi Mulazam, Ghulam, and how he was treated. So this is, I think, where the story starts. By developing that ability and understanding that even somebody, his job is that he is working as your assistant, but assistant does not necessarily mean that he has no heart or he does not feel. आप गाड़ी में बैठे हुए, why can't you appreciate कि आप गाड़ी में एसी के अंदर बैठे हुए हैं, एक आदमी जो साइकिल पे सड़क पे चल रहा है, मिट्टी जिसके मुंह पे पड़ी हुई है, उसका पहला हक होना चाहिए, या आपके एसी के अंदर बैठे आपका पहला हक होना चाहिए सड़क क्रॉस करने का? Just to think about it. Every time you just pass through somebody, doesn't it click in your mind that next day there is a possibility that you might not even have your own car? Then what would happen? The way you have been treating all the people, if they start treating exactly the same way, when you don't have a car, then how would you feel? So my dear, these are the very basic जो इस्लाम आपको बता रहा है. So
बी ट्रस्टवर्दी। मैंने इसलिए आपको बताया था कि मैं आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हूं, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट आई कैन कवर एवरीथिंग, जस्ट गिविंग यू समथिंग टू थिंक अबाउट। ट्रस्टवर्दी, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मैन इज नॉट द मैन विदाउट इंटेग्रिटी। एंड आई वाज लुकिंग एट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इंटेग्रिटी। सो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इंटेग्रिटी मीन्स बीइंग इंटीग्रल, and it says that you cannot be integral, yani ke you have a body, you have a soul, you have a mind, and you have a emotions, heart. You cannot be a complete man if you are not real. So that's how they define integrity, being real. Being real means what you are. Being real means close to the nature. And the person is not real if he is not true. Look at the dilemma. Khuda ki qasam, every single day you find 20 people telling you are going to call you back in 5 minutes and they never call you back. They will waste 20 minutes in trying to win arguments. Why didn't they call? They will not have the courtesy of saying, I'm sorry, I forgot. झूठ पे झूठ, द होल फाउंडेशन ऑफ दिस सोसाइटी इज ऑन झूठ। आई सी इट एवरी डे, आप नहीं देखते? यू सी दैट? इट्स एवरीवेयर। आई मीन हाउ कैन यू ट्रस्ट समबडी? मैं कल किसी शख्स को कॉल कर रहा हूं, 3 रिकॉर्डेड कॉलें मेरे पास है, मुझे सुबह आके कहते हैं मैंने देखा नहीं। पहले मुझसे 10 मिनट में बहस है कि जी आपने कॉल ही नहीं की। जब मैंने कहा यार मेरे पास सबूत है, फिर आगे से कहते जी मैंने देखा नहीं, और 2 मिनट के बाद स्टेटमेंट एक और चेंज हो चुकी थी। दैट्स हाउ पीपल आर। एंड खुदा की कसम, इट फील्स सो ऑकवर्ड। I became a spokesperson for Citibank just because of one good experience with Citibank. I was in America and I requested the helpline of Citibank to send me a duplicate copy of my credit card bill. And I was like, ma'am, please, I need it tomorrow morning. And she would say, sir, I wish I would have done it, sir, but it's 24 hours. You are causing a state of confusion. Science कहती है कि you are causing a state of confusion because your mind knows that you are speaking the lie. आपको पता है it did not happen that way, but you are saying, sir, मैंने खुद देखा. So that state of confusion will split your personality. और इस पे इतनी स्टडीज अवेलेबल हैं कि जो बीमारियों की वन ऑफ द मेन रीजन पीपल डोंट नो व्हाट दीज इमोशंस एंड व्हाट दीज स्मॉल थिंग्स आर डूइंग टू देम इन देयर बॉडी. दे आर स्प्लिटिंग देमसेल्फ, अपने आप को फाड़ रहे हैं झूठ बोल बोल के, क्रिएटिंग दैट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन योर माइंड डज नॉट से कि यार हुआ कुछ हो रहा है, ये बोल कुछ और. So my dear, it's not choice. ये मेरी और आपकी चॉइस की बात नहीं है. That's what the law of nature is. You cannot become a trustworthy person if you don't stand behind your words. So keep your promises. Think before you make a promise. Before you make a commitment, nobody should able to force you to make a commitment which you cannot live with, because at the end of the day, it's you who will pay the price, not that person. आपसे कोई कहता है, can you do it in 30 minutes? I'm sorry, I will do it in 45 minutes. Please do it 30 minutes. No, 45 minutes. I will try, but 45 minutes. Call you back in 5 minutes. Make sure that you call back in 5 minutes. It will happen today. It should happen today. If it cannot happen today, have the courage of saying, sir, I wish I could have done it, but 7 days. Sir, you will have it in 6 days, but 7 days. You are creating that integrity, जिसको अंग्रेजी में हमने वर्ड, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं. ये गोरों की किताबों में लिखा हुआ है, ये कुरान और हदीस में लिखा होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए. और हम गोरों की किताबों से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज इंटेग्रिटी. यू कैन नॉट बी कंप्लीट if you have no here, yes, just there.
You know you can do it and you say, I'll do it. You said I will do it and you did not do it. Creating that state of confusion. मौलाना हजरात, दाढ़ियों वाले हजरात, मदरसे के पढ़े हुए लोग, head to toe, everybody speaks a lie. So that's how, in true sense of the word, that you should take it. I'm going to call you back, so please do call them back. I do it, बीवी को कहें, I will be there at 7, make sure that you get there at 6:55. If you cannot be there 7, I will be there at 8 o'clock. इसका मायने है, under promise and over deliver. कम कहें और उसको over promise करें. So fulfill your obligations, चाहे वो आपकी job की obligation है. I mean, you are sitting here and you have some obligations. You are living in a neighborhood, you have some obligations. You are a son or a daughter, you have some obligations. So Islam is about fulfilling those obligations, because, my dear, it's Allah has not given you choice or me a choice. Whatever those laws are, you do it or you pay the price. No third option. ये अल्लाह की सजेशंस नहीं है कि हाँ डायरेक्टर साहब ने कहा था बेटा सुबह 7 बजे आ जाया करो. It is not a recommendation, it is the law. And the law, if you don't live with it, you pay the penalty. So you are going to pay the penalty, either you know it or not, my dear. But please do not do things without a reason. So, the next one is, आगे आ जाए. Stay away from suspicion and prying. Cutting it short, I think one of the things which Pakistanis needs to learn, don't poke your nose into every single thing. I think what I've seen everywhere, and I see it every day, you go somewhere and you're wearing a suit, बड़ा अच्छा सूट पहना, कितने का लिया? ये गाड़ी अब्बू ने ली, हाय ये कितनी प्यारी गाड़ी है, कितने की ली है? ये घर में आपने कोई हाउस वार्मिंग पार्टी कर दी है तो किसी ने आगे घर की तारीफ नहीं करनी, अपना किराए का है. ये सवाल, I lived here in this society and these things did not matter to me, but when I landed in America I could see how uncivilized we were. That provided me a basis for comparison. Nobody will invade your privacy. Nobody. Nobody will ask. देखें मुकाबलेबाजी खत्म हो जाती है, झूठ खत्म हो जाता है. कोई everybody is happy because you are happy. आपने एक चीज खरीदी है, you would have bought that thing because you liked it. इसकी कीमत की वजह से ना ये अच्छी होनी है ना ये बुरी होनी है. Then why should I ask you the price? You are happy, so I should be happy that you are happy. Not necessarily that I'm going to buy it for myself. No, we don't have that spirit. So we get into the competitive mode. कि मैंने सूट 600 का लिया, इसने 1200 का क्यों लिया? And it leads to something else. इसी तरीके से all these private questions, कितने नंबर आए, कितनी तनख्वाह है, तनख्वाह कितनी लगी, प्राइवेट कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी बड़ी, कैटेगरी कौन सी लगी, नंबर कैसे लगे, किसी के घर में जाके assuming the same thing, that you don't invade the privacy of that home. इसी का हुक्म यह है कि you don't visit somebody until unless you ask or seek their permission. You knock 3 times, you ask permission 3 times, if you don't get the permission, you come back. लोगों के घरों में बगैर परमिशन के जाना छोड़ दीजिए, बेडरूम में एंटर होना छोड़ दीजिए. इवन इफ दे आर इनवाइटिंग यू, के अंदर आ जाओ, डोंट. मुझे याद पड़ता है कि somebody asked me this question in one of the programs. Sir, if you are discussing something very important, I think you need to go outside and discuss it. If there is something so important, or maybe somebody is calling you, so please do not. This is also the obligation, your obligation, as a member of this whole forum, to make it easy for others.
There are people who are wanting to really focus, and they cannot focus because there continuously talk going on this corner. Please don't do that. Okay? So understand this, that privacy is something which you have to honor. You have to appreciate those people who are private. It is their right, the right which has been given to them by Allah. You cannot invade someone's privacy. मुझे याद पड़ता है कि when I was growing, somebody asked me in America, actually this whole thing started off because I would see people coming to I was living in Oklahoma, which is southern part of America, and every weekend we used to have exchange parties, and that area was Baptist dominated, who are very close to Islam or Muslims. So I would, people would come, and right after khana they will leave. अब मुझे उस वक्त मैंने हदीस नहीं पढ़ी हुई थी. So I used to become, I was very curious, यार ये खाने के बाद लोग बैठते क्यों नहीं है इधर? And someday then I came across that hadith कि रसूल पाक को तंगी होती है उनके घर में खाने के बाद बैठे ना रहा करो, वो कहते नहीं है तुम्हें. ठीक है, मैंने ये पढ़ ली. मैंने कहा यार इन्होंने हदीस तो नहीं पढ़ी, then why don't they stay? So that question, that curiosity, why they don't stay, led me one day to ask them directly. Baptist लोग, Baptist church के follower, मैंने उनसे पूछा why don't you stay with me? आगे से मुझे कहते हैं हंस के, well we are afraid, after खाने के बाद, because there is generally use of toilet after the meal, and we have been taught not to use someone's toilet. So before that stage occurs, हमने पानी पिया हुआ, ड्रिंक पी हुई है, बियर पी हुई है, खाना खाया हुआ है, इससे पहले कि our stomach starts making strange noises कि खाना हजम हो रहा है, बर्फ शुरू कर दो, या we have to rush to the toilet. Our families, father, parents have taught us that before that time happens, say goodbye and come back home. किसी के घर में इतना ना ठहरना कि उसको टॉयलेट भी इस्तेमाल करना पड़े. ये this is something which I am learning while I was in America. This is what this civilization has taught. And that they have learned it after 2000 years of civilization. And that's where the story of Islam started 1400 years back. जो उन्होंने 2000 साल की तंगी के बाद सीखा है, आपको प्लेट में रख के वो पढ़ाया गया था कि फॉर गॉड सेक डोंट मेक मॉकरी ऑफ यू. अपना मजाक ना उड़वाना, दुनिया में जलील ना हो जाना कि ये है मुसलमान. डू इट. So you are taken, you stay successful for all times to come. But unfortunately we have not studied it. We don't do it. So this is what I call the privacy, that you have to live with the privacy. Don't be curious, too much probing with others. Why did it happen? Why it didn't happen? Don't invade the privacy. और एक principle की हजारों किस्म की application है, which I leave it on your wild imagination. But this is a principle, and you need to find out how this principle can be applied in your unique situation. If you are living, let's say, in a hostel, इसके मानी कुछ और हैं. If you are living with a joint family system, इसके मानी कुछ और हैं. If you are living with your husband, with your father, with your mother, इसके मानी कुछ और होंगे. दफ्तर में प्राइवेसी किसी की मैनेज करने का कुछ और तरीका होगा. मोबाइल के ऊपर किसी की मानी कुछ और है. किसी का फोन उठा देना, किसी की किताब उठा लेना, किसी की टेबल पे बैठ के उसकी अखबार पढ़नी शुरू कर देना. This would be invasion of somebody's privacy while being in his office. किसी के कमरे में जाके कुर्सी ऐसे पड़ी हो तो आप कहें मुझे ऐसे पसंद नहीं, यार ऐसे होनी चाहिए. This is again the same principle, the violation of the same principle. It is his room. You have absolutely no right to change or to advise unless you are asked. How does it look? So this is again another principle which I think affects the relationship of people more than anything else. Envy, jealousy.
There are very interesting studies available on the subject of envy. And a recent study I had was, ये किसी 5 साल की किताब में ये पढ़ाओगे नहीं, जब रिटायरमेंट के बाद 50-60 बीमारियां लग जाएंगी, किसी के पास पढ़े होगे उसको भी कोई नहीं बताएगा. That's what I'm telling you, and you need to trust what I'm telling you. You don't know that if I'm saying something, I'm not saying because I've read somewhere. I've seen the power of these words. Every day I see people dying out of their ignorance, not of disease. Disease के पीछे हमारी जहालत है. एक हदीस है कि you will see these 3 things together because they are sisters. जहालत, अफलास और हंगर, भूख. बट द स्टोरी कहां से शुरू होती है? जहालत. और जहालत क्या है? नॉट नोइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ. एनवी इज टॉक्सिक. जेलसी, इस पे स्टडीज अवेलेबल हैं. व्हेन यू आर इन द फीलिंग ऑफ बीइंग एनवी, का आप जेलस है, इसके पास गाड़ी आ गई, उसका हस्बैंड की शक्ल बड़ी प्यारी है, उसकी बीवी बड़ी प्यारी है. एनवी, व्हाटएवर एनवी, उसके नंबर ज्यादा आ गए. एनवी, उसका बाप अमीर है. एनवी, उसकी गाड़ी बेहतर है. एनवी, उसके कपड़े बेहतर. एनवी. यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम इट. व्हाई? Because it has been declared in 1987 by British and American health societies, it is toxic. If you are in the feeling of envy, your brain secretes hormones which are toxic, and it affects the healing process. मेरे ऑफिस के अंदर we have recovered people from paralysis, from cancer. And if you have a science which can heal people from that, please show it to me. It is not possible, my dear, until and unless you have a blind faith on the laws of Allah subhanahu wa ta'ala and you know why the medicines are not healing. Allah itna zalim nahi hai. Why it is not working? Why he is not recovering? Only then you start asking these stupid questions. Why? What is he doing? Why? Let me find out why. And you discover that people are doing things, they are carrying hatred in their hearts and taking it, for years and years and years. Nafratein paali hui hain logon ne. So all these bad emotions, the pride, arrogance, envy, jealousy, hatred, they are toxics. And because they are toxic, Allah subhanahu wa ta'ala has told you, it affects the relationship, but more than affecting the relationship, it is not even good for you. Okay, ji, next. Keep away from backbiting. You will hardly see anybody in America interested in listening anything against anybody else. You go to somebody, sir, I would like to tell you something about that guy. तो पहला सवाल आपसे वो पूछेंगे, have you told him? Go, tell him. वो आपको persuade करेंगे कि जिसकी बात है उसको जाके बताओ. And unfortunately, we are living in a culture where the person who is affected by this would be the last person to know it. The whole society and the whole college and the whole family or the whole neighborhood would know first before that guy would know. Grapevine would spread. And that is why it is such a sakht hadith, harsh hadith has been narrated, कि तुम अपने भाई का मुर्दार गोश्त, कच्चा गोश्त खाना, कैनिबल. आप मूवीज देखते हैं ना कैनिबल की, कैनिबल्स, ग्रॉस. So this is a word. Hadith के मुताबिक you become cannibal when you do backbiting. What do you think of cannibals? Ask yourself. Flesh. अपने भाई का गोश्त खाओगे? जो कैनिबल खाते हैं? नहीं, तो then don't speak about him. और किसी तरह से भी मत कीजिए क्योंकि दोनों हालत में ये गलत है. You don't. Don't believe in everything you hear.
किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बाहर सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे बयान कर दे. That's all. So if you really want to pass it over, first of all you need to accept the responsibility of ascertaining the truth. आप मुझे ये नहीं कह सकती मुझे नहीं पता लेकिन उसने ये कहा है. Then don't tell it to me. If you want to tell it to me, then you should say somebody told it to me and I have done my research, it is truth, that is why I am telling you. So you don't just become a post office, you don't become a postman, that you are just collecting information and passing it over. You don't do that. पूरी मुआशरे का निजाम तबाह हो जाएगा if we stop synthesizing the information and just continue passing it over and passing it over. And that's what the media is doing today. Without synthesizing the information, we are just passing it over, giving it to those who don't have that shaur to analyze it, to interpret it. ऐसे ऐसे टीवी के प्रोग्राम्स में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, you don't even know what to do, you believe in it. So don't pass it over if you don't believe. And I think that is why we say that American or the Western media is more socially accountable media than Pakistani media. यहाँ पे तो you can do anything, you can say anything, you can slander anybody. You can slander anybody. सुबह फाइज ने ये कहा, फाइज ने शोर मचाया तो आगे अखबार में इतनी सी लाइन लगा दी, माफीनामा. वो जो प्रोग्राम में रात को बैठा हुआ 2 लाख बंदा सुन रहा था जिसपे आपने मुझ पे सरेंडर किया, क्या वो 2 लाख बंदा आज बैठा हुआ था टीवी के आगे? Somebody will never listen to Faiz because last night that's what he heard about Faiz. So slandering इतनी बड़ी गाली है इस मुल्क में. It is a pastime. हमारे मुल्क में ये पास टाइम है. रात को हर टीवी का चैनल बैठा सरेंडर कर रहा है. Everybody. And this Tom, Dick and Harry is kind of a, anchor person. I mean, they should be hanged. They don't know what they're doing. And by the way, what is their own character? They can raise voice against everybody and anybody. Because you are the one who have given them this autonomy, that they can walk away with anything. आप लोग उनको आज़ादी दी हुई है. लिखे उनको लेटर को, how dare you do this? How can you slander without proof? Bring a proof. कुरान कहता है इनसे कहो अपने सबूत लेकर, इनसे bring the proof. Only then you have the authority, otherwise you will not. Do your research, bring the proof, prove it, and then fine. But you don't start the investigation process by already alienating a person. आप पहले उस पर इंक्वायरी करते हैं फिर एलिगेशन रेज करते हैं. यहां पे एलिगेशन लगा के इंक्वायरी शुरू की जाती है. उल्टे साहब. आगे जी. कीप ऑफ फ्रॉम वल्गैरिटी. इन नो वे, नथिंग जस्टिफाइज अ वल्गर लैंग्वेज. अगेन, it causes a state of confusion in your mind. It is very, very, very tough thing, and I think if I had more time, I would like to discuss this some other day. लेकिन language, गंदी ज़बान, these buzzwords, jargon, slang words which you have picked up, अगर मेरे पास कभी टाइम हुआ मैं आपको बताऊंगा कि what abusive language would do to you. मैं आपकी मशीनें लगा के आपको साबित कर सकता हूं कि okay, now you abuse and see what happens to you. I've done it. तो मैंने तो इस तरह की बड़ी रिसर्च की. आई थिंक आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो 20 साल से कर रहा हूं. द मोमेंट यू अब्यूज इट चेंजेस द होल केमिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजी. आप गाड़ी निकालें, देखें आपके साथ होता क्या. एंड काश आपके पास अंदर की चीजें लगी हों कि यू कुड सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू. तो एंगर हो, गुस्सा जिसे आप कहते हैं, गुस्सा है, अग्रेशन है, गाली गलोच है, it is a killer. That is why it is haram. It is haram because it is a killer. It is suicide. And you must have seen those people because they were so aggressive that they had hypertension, they were hypertension patient, or they had high blood pressure because they were oversensitive
or over emotional or over aggressive. So इन चीजों से बचें. ये we have unfortunately what we know of the West is what they have shown us about the West. So the people who abuse in America, they are called trash. Their own white collar population call their own people who abuse as trash. ये ऐसी बात ही है कि in America and Europe you will hardly see any white collar families sitting in a restaurant in weekdays. Their civilization has taught them that they sit down together and have a meal as a family, that they don't go out in restaurants. Whereas in this society what you have learned is the more affluent you are, the more outside meal you must be having or eating. So totally opposite. वहां पे खाने बाहर वो लोग खाते हैं जिनके जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है. व्हाइट कॉलर फैमिलीज, मैरिड, हैप्पीली मैरिड फैमिली बच्चों के साथ, दे लाइक टू स्टे एट होम. दे ईट ऑन द डाइनिंग टेबल. They don't like to go for fast foods. And they eat differently. So अल्लामा इकबाल कहते थे ना, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर. Something which was bad, the same thing has now become good. घरों से बाहर खाना बुरा हुआ करता था, अब वही फैशन है. So be a no nuisance person. Wash out your civic obligations. Fulfill your obligations. Don't cause nuisance on roads and in neighborhoods. गाड़ी को क्यू में चलाएं, गाड़ी सही जगह पे पार्क करें, किसी का रास्ता ना रोकिएगा, किसी गाड़ी के पीछे गाड़ी ना लगा लीजिएगा, एमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता दीजिएगा, पार्क करें, सोच समझ के करें, किसी का रास्ता तो नहीं ब्लॉक हो रहा, शीशा खोलें, दरवाजा खोलें तो देखें कोई बाहर साथ खड़ा. तो एक हदीस के मानी, a Muslim is he from whose hand and tongue the other Muslims are saved. खुदा की कसम, if you start writing interpretation of only this hadith, it would require volumes and volumes and volumes. What does it mean? और ये जबान के मानी गाली जबान नहीं है. हाथ के मानी it's not hand, it's actions. जबान के मानी टंग या वर्ड नहीं है, कॉल, जिसके कॉल और फेल से कोई दूसरा महफूज नहीं है. सो फेल का मतलब है एवरी सिंगल थिंग यू डू, अगर इससे दूसरा महफूज नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं. सो अब नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल दिस कंट्री, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और समथिंग एल्स पाकिस्तान. बिकॉज ये हदीस तो आपको बता रही है कि मोमिन कौन होता है और मुसलमान कौन होता है. और याद रखिए, मोमिन तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मुसलमान के बारे में कहा गया. नेवर कॉज न्यूसेंस टू एनीवन फ्रॉम एनी ऑफ योर एक्शन. चाहे नेबरहुड हो, गाना ऊंचा नहीं सुनना. जैसे ये क्लास में भी शोर हो रही थी, मैंने उस टीचर को न्यूसेंस पेश नहीं करनी. अम्मा को न्यूसेंस ना हो. रात को उठे तो कुंडी इतनी आराम से खोलनी, किसी को आवाज ना आए. बाथरूम जाना तो शोर ना. आई मीन इट्स बेसिकली क्या, यू कैन राइट वॉल्यूम्स and volumes of information and just imagine what that person would become जो अपने घर में ही ऐसे. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा ख्याल एक चीज से क्लियर हो जाएगा आपको. अपने घर में कौन आ रहा है? पैगंबर आ रहा है. कौन आ रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं. खातमुन नबीयीन आ रहे हैं. शहर में एंटर होते हैं. दिन नहीं चढ़ा, थोड़ा सा अंधेरा है. खैमे डाल दिए जाते हैं कि पड़ाव किया जाए कि जी घर नहीं जाना. नहीं, जब भी नहीं जाना. पड़ाव कर दिया गया. दिन चढ़ा, मुलाजिम को अपने घर भेजा जा रहा है कि बेगमात को खबर दें कि रसूल पाक आ गए हैं. अगर आपका दिन शुरू हो गया तो हम तशरीफ लें, कि वो मुंह हाथ धो लें, नहा लें,
कोई मौका मिल जाए, किसी ने खामद आया, कोई पानी का कुछ गिलास पिलाना है, उसको लाड प्यार करना है, उसको मौका दिया जा रहा है। अपने घर में किसी के लिए न्यूसेंस नहीं क्रिएट की जा रही। हम रात को 12-1 बजे आते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, ये विदाउट एनी रिगार्ड के साथ वाला कोई सो रहा होगा, या बीवी सो रही होगी, या बच्चा जाग उठेगा। दैट्स हाउ। और एक तरफ वो आपको मिसाल दी जा रही है कि वो अपने घर में एंटर नहीं हो रहे। So this is a very small example of what Muslims are ought to be. And after 8 p.m. you cannot imagine American people visiting anybody. There's time to go to sleep. यहाँ पे we buzz into somebody's home at 12 midnight. We call somebody at 12 o'clock. Without regard के सोया होगा, फिर अक्सर कहा रॉन्ग नंबर। अब मुझे नहीं समझ आती अमेरिका में रॉन्ग नंबर क्यों नहीं आते। I mean, this is something which bothers me. कि I lived there for 7 years, I have no wrong number. यहाँ पे हेलो आप कौन है, आप कौन है, बेबी कॉल आपने किया, आप कौन है, ऐसे रॉन्ग नंबर आते हैं। और या फिर मुझे लगता है सारे दिन नशे में बैठे हुए हैं, नशे में आ गए, गलत नंबर डायल कर, ओ ओ ओ ओ अच्छा जी सॉरी रॉन्ग नंबर। तो इसके मायने क्या होंगे नो न्यूसेंस के? Make sure that you look at the number 3 times before you press send. Just giving you example कि इसके एक मायने लिखने शुरू कर दें, you can become very different person if you just started living your life only on one hadith, only one, nothing else. कि just make sure कि आपसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाथरूम जाना हो किसी के घर में, हमारे वालिद साहब कहा करते थे, यू एंटर इनटू द वॉशरूम, लुक अराउंड, मेक श्योर दैट यू लीव दिस बाथरूम एग्जैक्टली इन द सेम वे। साबुन जहां से उठाओगे उधर ही जाएगा, तौलिया जिस तरह होगा वहीं पे जाएगा, जूता जिस लेवल पे होगा उसी लेवल में जूता होगा। इफ नॉट बेटर मिनिमम लीव इट एग्जैक्टली द सेम। और हमारी हालत यह है कि कोई वजू करके बाथरूम से निकले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो ये सिर्फ सोचा है कि वजू कैसे करना है, उनको ये हदीस नहीं पता कि रसूल पाक से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वजू करने में कितना पानी, तो आपने कहा पानी का भी हक है, नॉट मोर देन अ सा। सा क्या है? एक लोटे से वजू होगा। अगर वजू लोटे से होगा तो दांत साफ कितने अच्छे होंगे, और नहाया कितने से जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन व्हाट वी डू टू द वाटर। गाड़ी में से धुआं नहीं निकलेगा, सल्फर नहीं फटेगा, I mean, and so on and so forth. So just one hadith. So खुदाया, just live with something, just just try to take away at least one lesson out of this door which will stay with you for the rest of your life. Never ask for undue favors. I think I would like to wrap up here. Time, maybe I have a flight to catch. So be kind, be courteous, grateful, be gentle and kind. अच्छा ये this is it. यहाँ पे रोकेंगे. If I had time, and I will inshallah someday, we are trying to establish an institute of alternate therapy in Lahore, healing के ऊपर, जिसमें ये चारों जो साइंसेस हैं इनको इकट्ठा करके हीलिंग के बनाना की कोशिश कर रहे हैं. Someday inshallah we also have it in Karachi as well. लेकिन based on what? Psychologists, psychiatrists, management consultants and medical doctors have been proving that there are personal characteristics called emotional intelligence which are responsible for the ways how we behave, how we feel, how we relate to others, and how well we do at our jobs, and how healthy we are. You cannot even stay healthy if you are causing nuisance to somebody. वो कहते हैं ना garbage in, if you are spreading garbage, throwing garbage, it means that you are collecting garbage too. अगर आप लोगों को नफरत बांटते हैं, गाली गलौज, समझता है कि अपने आप को क्या शक्ल है इसकी, क्या पहना हुआ है, क्या बना हुआ है, that's the kind of a statement which we are giving every day. सड़कों के ऊपर हम गाड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं, किसी के आगे आ जाएंगे, वो कहेगा दफा साइड पे हो जा. So we are grudge collectors, we are garbage collectors. So whatever you give to this life, it comes back to you many times.
ये ऐसे ही रिफ्लेक्शन है कि आपने थूक फेंकी अपने मुंह पे आएगी. You whatever you do to the others, अल्लाह का निजाम ऐसा कि it has effect on you. So think twice what you would like to have coming back on you. What you are giving to others is something which you want for yourself, or would you rather have something else coming to you? Love, praise, blessing, appreciation, encouragement. अगर ये चाहिए, then you have to learn how to give it all the time. Every person you meet, Assalamu alaikum, wa alaikum salam, have a nice day, wonderful day, smiles. So that's what you are collecting. America mein, they are not Muslim, right? The very first month in America, my wife was with me, and मुझसे मेरी वाइफ पूछती है बार बार, मैं 6 महीने पहले चला गया और 6 महीने बाद आई, तो मैं 6 महीने में जरा क्लाइमेटाइज हो चुका हुआ था. तो वो आई, तो हम कहीं गुजरते हुए जा रहे, ग्रोसरीज कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो कोई साथ से गुजरेगा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हेलो, हाय, बाय. अच्छा, मुझे कहती ये कौन है? ये कौन है? इसे कौन जानते हो? ये कहां पे देखी है आपने? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता ये कौन है. But that's how they are. Everywhere you go. अब मैं साउथ की बात कर रहा हूं, which is a place of red Indian, और उसके बारे में कहा जाता है they discriminate even the people living in the east of America, which is the eastern part of New Yorkers, because they consider only them as the true Americans, red Indians. वो लोग, hi, bye, have a nice day, have a nice flight, have a nice journey, have a safe journey. सारा दिन वो ये दुआएं बांट रहे होते हैं टेलीफोन के ऊपर. ये नहीं कहते हेलो, हाय, 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 हाय. That's what we do. Assalamu alaikum, have a nice day, have a pleasant flight, have a safe journey back home, have a wonderful evening. ये उनकी विशेष है. सारा दिन उनकी ये विशेष है. और हमारी विशेष क्या है? पागल पुत्र है, खराब हो गया. So it has an effect. Okay, so be careful. Emotional intelligence tendencies can result in being uncomfortable with other people. If you are poor in emotional intelligence, if you don't live with those manners, it means that you will not be comfortable with people, you will not be happy with your job, you will not succeed at your job, and even being physically and psychologically unhealthy. अगर आपके तल्लुकात खराब होंगे, आप लोगों को गालियां दे रहे होंगे, मैनर्स आपके होंगे नहीं, तो यू कैन नॉट बी फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्दी, जिसकी वजह से आपको इतनी बीमारियां नजर आती हैं. सो माय डियर, you will also have more stress. So at the end of the day, what you have to realize is, somebody asked Holy Prophet, peace be upon him, Ya Rasulullah, आपको किस लिए भेजा गया है? आप पैगंबर हैं, आप ये हैं. तो आगे से आपका जवाब ये था, I have only been sent to perfect good manners. कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अखलाकियात बढ़ाने के लिए भेजा गया है, और वही अखलाकियात जिसमें आज वी स्टैंड नोवेयर. We literally we don't. What is the behavior which you see people standing in the queue? सड़कों पे आपको क्यू में लगे कभी बिहेवियर नजर आया? अभी यहां से बाहर निकलेंगे जब बिहेवियर देखिएगा. नमाज जुमा पढ़ने जाएंगे ना, जुमा पढ़ने, ये जुमे के बाद जरा लोगों का बिहेवियर मिला तो बाहर निकलते हैं. एंड यू वुड नो कि ये शायद भूल ही गए हैं कि ये भी करके क्या आए हैं. ये जिस रब के पास से आए हैं, ये जुमा पढ़ने की तलकीन जिस रसूल पाक ने की है, रहमतुल्लिल आलमीन जिनका नाम लेते हैं, ये वतीउल्लाह वती रसूल, क्या वती रसूल ने सिर्फ यही कहा था जुमा पढ़ना, या उन्होंने कुछ और भी कहा था? कि हकूक अल्लाह में कुताही तो अल्लाह शायद माफ कर दे, हकूकुल इबाद में कुताही माफ नहीं होनी जब तक कि वो शख्स माफ नहीं करेगा जिसका हक जाया हो. तो जिसका आज आपने पांव के ऊपर पांव दे दिया, जिसकी जूती टूट गई, जिसको कोनी मार दी, जिसके ऊपर से यू जस्ट बम्ड ओवर और यू जस्ट बम्ड हिम इनटू हिम, वो माफी नहीं होनी. सो माय डियर, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिट of Islam, because remember, if I do say my prayers
or if I read Quran, this is something very private. You are least bothered about my beard or how many prayers do I say and how I say my prayer. But what my face, which is obvious to you, is my manners. वो कहते हैं कि character is something which you don't see or which you will not get to see until unless you like something from the packing. Are you getting the point? You get attracted towards somebody because of the packing. What is obvious? कि यार ये शख्स you cannot ignore somebody जो आपके पास से गुजरा सोचेगा अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, हैव अ नाइस डे, उसको आप भूलेंगे नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये चीज आगे से आपको किसी के करीब ला सकती है. या somebody was let's say wearing a good suit, but fine, you like somebody because he is always dressed properly, और जब यू फोन के इश्तिहार की तरह वो कहें क्या तेरी मेहरबानी तो उसके कपड़ों की खूबसूरती कितनी देर तक चलेगी. सो फाइन, ड्रेसिंग इज ओके, but right behind dressing there is something else which will bring you closer to the people and it will help you achieving tremendous success in your life, and those are your manners. आप सीवी लिखने के मैनर्स हैं, फोन उठाने के मैनर्स हैं, आपको कोई तोहफा देता है उसको मैनर्स हैं. आपने अपने टीचर को लिखा सर थैंक यू वेरी मच. अब ये थैंक यू ग्रेटफुल होना किसी का, ये दुनिया का कानून है, अल्लाह ताला का कानून है. अल्लाह ताला कहता है इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, इफ यू आर नॉट देन इसका अजाब भी तुम पे पड़ेगा. सो ग्रेटफुल होने का मायने क्या है? इट्स नॉट लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी मेरी चंगी नहीं, गड्डी खराब होगी, गड्डी खराब. शुक्र मीन्स कि दैट यू डू जस्टिस टू व्हाट अल्लाह सुब्हाना ताला हैज गिवन टू यू बिफोर आस्किंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा. Allah has given me motorbike, so I do justice to motorbike. I keep it clean, I use it, I don't abuse it, I take care of it, I get the oil changed. ये है शुक्र करने का तरीका, ये शुक्र का तरीका है. तो अल्लाह कहता है कि तुम इस तरह शुक्र करोगे then I will give you a car. आपको जो चीज दी गई वो आपको नजर ही नहीं आती और आप कहते हैं हाय अल्लाह मुझे गाड़ी देगा तो फिर मैं गाड़ी साफ करूंगा, बड़ा घर होगा तो फिर मैं उसकी सफाई करवा लूंगा. दैट इज नॉट द वे. सो माय डियर, मेक श्योर दैट यू लर्न दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू बिकम what you ought to be, I think you will develop a tremendous ability to get along with people and also become successful in life, because everybody would like to be somebody who is easy to be with. May Allah be your guide, and it is my request for you. Okay, we have spent about a couple of hours together, so please, before you leave this room, please make a genuine, sincere commitment to you and Allah subhanahu wa ta'ala that at least you will start practicing one or two manners, and from regardless of how people are going to treat you, pick up anything, any habit that will become sadqa jariya for you and sadqa jariya for me. Pick up anything. आज से ही वादा कर लीजिए, every single person I meet I'm going to say assalamu alaikum. या ये कह दें मैंने आज से झूठ नहीं बोलना, ये कह दें आई हैव टू वॉच माई राइट, वॉट एवर इट मे बी, बिकॉज दिस इज वॉट वी ओ टू दाओ, दिस इज वॉट वी ओ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुडे एंड टू स्पेंड दीज 2 hours टुगेदर. This is a bare minimum that you can do, at least pick up one good thing or leave one bad thing before you walk out of the door. May Allah subhanahu wa ta'ala be your guide, and please remember me in your prayers. Thank you very much.